Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi Batra and this is where we get you all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के ट्रेडिंग सत्र का। कल का हैंडओवर काफी पॉजिटिव था इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से, लेकिन ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज काफी वीक रहे हैं और हो सकता है 3 दिनों की तेजी के बाद आज ये तेजी थमती हुई नजर आए, क्योंकि काफी वीक ग्लोबल क्यूज है और उसी का इंडिकेशन आपको आज डोमेस्टिक मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। फटाफट से देखते हैं कल का ट्रेडिंग एक्शन क्या था। 2.25% तक की मजबूती हमें बेंचमार्क इंडिसेस में दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने माइलस्टोन लेवल्स के ऊपर बंद हुए, 51,444, और अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो 15,245 के लेवल पर यहां पर निफ्टी में भी क्लोजिंग हुई है 326 पॉइंट्स के गेन्स के साथ, यानी कि 2% तक की बढ़त यहां पर भी दिखी। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त थी, 948 पॉइंट्स की यहां पर तेजी दिखी। 36,368 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक भी बंद हुआ और यहां पर भी 2.5% तक की स्ट्रांग मूव देखने को मिली टुवर्ड्स द क्लोज। ब्रॉडर मार्केट्स में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, हालांकि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया बेंचमार्क को, लेकिन फिर भी 1.5% तक की बढ़त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिली है। ओवरऑल काफी ब्रॉड बेस्ड रैली कल के ट्रेडिंग सेशन में, डिस्पाइट द चॉपीनेस दैट वी हैड सीन टुवर्ड्स द क्लोज। दिस वाज द लास्ट 1.5 hours buying that we had seen that shot up the indices towards the last 1 hour of trade. Moving on to understand what kind of cues are we getting from across the globe. So you can actually see clear deep red as far as the US markets are concerned. Now the US 10-year treasury yield have climbed more than 8 basis points to a high of 1.49%, and they later settled at 1.47%, but definitely it did put the pressure on the US market indices. You can actually see the most of the underperformance came in from Nasdaq with 2.7% loss there. It's only trading at 12,997. The S&P 500 also 3819. That's the kind of level that it was trading at, with a loss of 1.3%, and 31,270. That's the level for Dow Jones, that was down about 0.4% as well. So most of the selling came into the technology space as well, and the rising bond yields also forced the investors to be worried about the borrowing costs and inflation. So they actually focused more on the stocks that were linked to the economic recovery and not the IT stocks yesterday. And you can actually see that it's the rising bond yields again that have dampened the sentiment across the globe. So it's not just the US markets, the spillover effect is also being seen in the Asian markets. You can see all Asian markets are also trading quite in the red. When you talk about 2% loss for the Hang Seng in the early trade, and 1.77% loss for the Shanghai also right in the opening trade, and Nikkei 225 is also below the 30,000 mark. Now it's inching closer to the 29,000 mark. With a loss of about 1.8% in trade. So all the indices over 1% of cuts, some of them closer to 2% cuts as well. Now let's move on to find out what this indicates for the Indian market opening today. You can clearly see the SGX Nifty is down by 1.5%. So the markets are likely to pair all the kind of gains that it had made in the last trading session, and they may open deep in the red but closer to the 15,000 mark in the Indian markets. तो अब देखते हैं कि डॉलर रुपये में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। 72.72 टू द डॉलर के हिसाब से इस समय रुपी ट्रेड कर रहा है। 0.88% तक के अपटिक्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखना ये होगा कि यहां पर अभी डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रेशर आ सकता है इंडियन मार्केट्स में। आगे जाते हुए क्रूड ऑयल मार्केट्स पे भी अगर आप रुझान देखेंगे तो कल की वीकनेस के बाद अब यहां पर एक बढ़त देखने को मिल रही है 0.3% तक के अपटिक्स के साथ। ब्रेंट क्रूड $62.91 टू द बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप WTI या फिर US क्रूड की बात करेंगे तो अपटिक्स यहां पर भी हैं 0.23% तक के $59 टू द बैरल के हिसाब से यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। खास तौर पर आज क्रूड ऑयल मार्केट स्पेस पे सबकी नजर होगी, क्योंकि ओपेक और अलायंस की आज बैठक है। इस बैठक में यह तय होगा कि अब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो हैं वो क्या तय करते हैं। जिस तरीके के अभी तक सप्लाई कट्स को मेंटेन किया हुआ था थ्रू आउट कोविड, क्या उसका एक्सटेंशन होता है या नहीं। कुछ दिनों पहले तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अब जो सप्लाई कट्स हैं वो रिमूव होंगे, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है वो होनी शुरू हो जाएगी और ये कट्स रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट इंडिकेशंस आ रहे हैं, खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि शायद आज की बैठक में ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो अभी तक का सप्लाई कट मेंटेन किए हुए हैं वो अप्रैल के महीने तक भी एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे, और शायद इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में आज रुझान ऊपर की तरफ का है। तो ये डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए फर्मनेस के डेफिनेटली हेल्प करता हुआ नजर आता है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी है. फर्स्ट अप, इट्स इंडियन बैंक दैट इज गोइंग टू बी इन न्यूज टुडे. 1.23% of an uptick was seen in yesterday's trading session. Now CRISIL has revised the bank's tier 1 and tier 2 and infrastructure bonds rating to stable from negative, so that's a positive news, and you may see that the bank may show an uptick if this nifty bank really stays positive in today's trading session.Moving on to another stock that you need to watch out for, Ircon International. That stock actually fell today yesterday of about like 7% despite the kind of rise that we had seen across the board in the markets yesterday. Now the government is going to be selling 6% additional stake via an offer for sale on March 4th. That's today. The company bagged the letter of award worth 187.8 crore rupees from Railways Ministry as well. So that may in fact give some positive sentiment to the stock in today's trading session. So the losses might recover today. Move on to VST tillers and tractors. That stock is going to be important to watch out for. 0.5% gain was seen yesterday. The company will invest $1.5 million into Zemenco Inc. and that again is going to be positive for the company. Moving on to Bajaj Electricals now. 3.5% uptick was seen in yesterday's trading session. Now the company and Mahindra Logistics have signed an agreement for innovative technology or logistics optimization and outsourcing arrangement as well. So that also might augur well for the company and its financials going forward from here. So again, a positive for that one as well. IRCTC was down yesterday by 0.5%. The company will operate trips through Golden Chariot from March 14. That's a sentimental positive that you may see playing out in today's trading session as well. So another stock that you need to keep an eye out on would be Techno Electric and Engineering Company. 3.5% uptick was seen yesterday. SBI mutual funds have reduced the stake in the company to 6.13% from 7.12% via open market sale. So there could be some downtick that you can actually expect on the stock in today's trading session as well. Union Bank of India, from the banking space again, you need to watch out this one. ICRA has assigned AA plus / negative credit rating to the bank's proposed Basel 3 complement tier 2 bonds as well as aggregating up to 2,000 crore rupees. You need to watch out this space as well. There could be an indication of an uptick in this stock in today's trading session. However, the overall sentiment is likely to be down, so we may not be able to see too much uptick also happening even if the news is positive for these individual stocks as well. Moving on to the IPO space, yesterday we did see MTR Technologies open for subscription. It was a strong opening that we had seen because overwhelming subscriptions happened on day one itself. It got fully oversubscribed as well. On day two, so far, we have the data that 3.68 times is the subscription that we have already seen on this IPO. The company has fixed a price band of 574 to 575 rupees per share, and the IPO will close in tomorrow's trading session. Most of the brokerage houses have given a subscription rating either for long-term or for listing gains as well, but there is a slight caution on the valuations front, which most of the brokerage houses find quite aggressive at the moment as well. So we'll just have to wait and see how the closing happens of this IPO and how the listing takes place the next week. But here are the stock recommendations that you can keep on your radar today. So Vikas Jain from Reliance Securities has bet big on SBI Life. He sees a target price of 995 on the stock price with a stop loss of 865 that you can maintain on this stock. Moving on to Torrent Pharma from the pharma space. Yesterday, the pharma space was, in the uptrend, and we may see some bit of movement on Torrent Pharma today. The target price that he has recommended on the stock is 2650 with a stop loss of 2430 on this counter. आगे बढ़ें तो देखते हैं TVS मोटर पर इनका सेल कॉल है. 1.5% तक की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही थी कल के ट्रेडिंग सेशन में. स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको बताया गया है ऊपर में 670 रखने का, और साथ ही टारगेट प्राइस 565 तक जाता हुआ ये नजर आ सकता है आज की ट्रेंड में. ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ओवरऑल वीकनेस है तो टारगेट प्राइसेस के क्लोजर ये जाता हुआ नजर आ सकता है. आगे बढ़ें तो अगला स्टॉक रेकमेंडेशन है मनीषा की तरफ से. सिप्ला पर ये बेट कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, और साथ ही टारगेट प्राइसेस इन्होंने सजेस्ट किए 840 से 880 रुपीस तक के. स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 775 रुपीस का. साथ ही आप देखें तो मनीषा मानते हैं कि फेडरल बैंक में भी पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है. कल के ट्रेडिंग सेशन में 5.5% तक का अप मूव था. यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं 83 रुपीस का. वहीं टारगेट प्राइस आप लगाइए 94 से 98 रुपीस का, और खरीदारी करने की यहां पर सलाह आपको दी गई है. तो
चलिए, ये सभी स्टॉक्स आपको मिल चुके हैं। एक और स्टॉक मनीषा के पोर्टफोलियो से जामना ऑटो पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस आप यहां पर 85 रुपए का रख सकते हैं, वहीं 67 का स्टॉप लॉस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और 2% तक की तेजी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी थी, लेकिन देखना यह होगा कि आज के सेशन में भी कुछ एक स्टॉक्स में जहां पर भी बाय कॉल्स दी गई हैं वो लेटर ऑन एटलीस्ट यहां पर सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, इसलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए, आपको सभी 6 कॉल्स मिल चुकी हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसी के साथ हम इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन मार्केट ओपनिंग एक्शन और मार्केट के पूरी दिनचर्या का कवरेज जारी रहेगा मनी 9 पर। तो आप जब बने रहिए हमारे साथ मनी 9 पर।